Hello everyone. Today we will start with a new topic, chemical thermodynamics. And under this we will first see the meaning of the term thermodynamics. In this you are having two terms, okay? Thermo and dynamics. Thermo is related to heat and dynamic is something which is changing. Okay, we say that Bollywood fashion is dynamic because it changes time to time. So something which changes is called dynamic. Thermodynamics where there is changes related to heat energy. Okay, so how we define thermodynamics? It is a process which is concerned with the energy changes. It is a process which is concerned with energy changes occurring in physical and chemical processes. Physical and chemical transformation wherever takes place, there thermodynamics study will be involved. ओके कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एक रिएक्टेंट टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है. नाउ एनर्जी चेंजेस, मोस्टली द हीट चेंजेस विच ऑकर इन दिस प्रोसेसेस विल बी स्टडीड in the branch of chemistry known as thermodynamics. Now we need to understand certain terms which are used in thermodynamics. The terms which are used in this thermodynamics branch, first one is called system. Okay, आपको समझना है एक एक टर्म का मीनिंग एंड देन यू नीड टू लर्न देयर वन लाइन डेफिनेशन. ठीक है. नाउ वी कंसिडर एनी सिलेंडर. सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है which is containing certain amount of gas filled in it. Okay, we are having a container in which a gas is filled. Now there is a piston, there is a movable piston. ये पिस्टन को जब आप नीचे लेके जाओगे तो इसका गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा. इस पिस्टन को जब आप ऊपर खींचोगे तो इस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा. ओके, एंड if we want to increase pressure more, then we can also keep some weight on the surface of the gas. Now this gas which is filled in the cylinder, we want to study change in the volume of the gas when we move the piston down or when we apply weight over it, right? So the change in the volume of the gas in the cylinder will take place. This gas which is filled, this gas which is filled in the cylinder is known as system. मतलब पूरे यूनिवर्स का एक छोटा पार्ट, मे बी अ बीकर और ए टेस्ट ट्यूब और ए सिलेंडर लाइक दिस विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम. ओके, नाउ एनीथिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग. अगर ये हमने लैब में किया है, ठीक है, अगर ये वाला गैस का कंसिड्रेशन, वी स्टडी दिस गैस इन ए कंटेनर इन ए लैब, तो वो लैब जो है वो सराउंडिंग है, ये कंटेनर जो है वो सराउंडिंग है. एनीथिंग विच इज़ आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ओके, सो हाउ वी डिफाइन सिस्टम एंड हाउ वी डिफाइन सराउंडिंग. System can be defined as the part of universe under thermodynamic investigation. Okay, a part of the universe under thermodynamic investigation is called system. And how we define surrounding? All other parts, मतलब सिस्टम को छोड़ के all other parts of the universe outside the system such as the room, the cylinder and others is called surrounding. Okay, तो सिस्टम के बाहर जो भी है, रूम या लैब या सिलेंडर, ऑल दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग. नाउ वी कम बैक टू द सिस्टम. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. लेट अस सी what are they. The types of system can be, first one, it can be explained in this way. First one is called open system. Suppose मेरे पास एक कप है
और उसको उसके अंदर हमारे पास है हॉट कॉफ़ी. Okay, now if this is open, the coffee will get cooled down, right? The heat energy will move from the system to the surrounding, as well as the hot vapors will go out to the surrounding. So this system, an open cup of hot coffee, is called open system. And how we define this system? System which exchanges both एनर्जी, obviously ये हीट एनर्जी है, एंड मैटर with the surrounding is called open system. System which exchanges both energy and matter with the surrounding is called open system. For example, hot coffee in open cup is example of open system because it will exchange heat energy as well as matter. मतलब water vapor with the surroundings. Water vapor will come out from the cup and it will go to the surrounding. So this is open system. Now we come to the second type of the system. It is called closed system. What do you mean by closed system? इसी कप को अगर मैंने सॉसर से कवर कर दिया होता तो क्या होता था? कॉफ़ी तो कूल डाउन होगा लेकिन धीरे धीरे, बट द वेपर्स विल नॉट मूव टू द सराउंडिंग, राइट? सो क्लोज्ड सिस्टम इज अ सिस्टम विच एक्सचेंजेस एनर्जी. आई विल से इट एक्सचेंजेस एनर्जी क्योंकि कॉफ़ी कूल तो होगा ही. अगर मैंने उस पर लिड भी लगाया है तो भी कॉफ़ी कूल होगा, मतलब हीट एनर्जी विल गो आउट. सो closed system is a system which exchanges energy but not the matter, right? क्योंकि हमने कप के ऊपर कवर लगा दिया तो जो वाटर वेपर्स है इट विल नॉट गो आउटसाइड, मीन्स मैटर इज नॉट एक्सचेंज. सच ए सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम. सो ए कप which is containing coffee and covered with a saucer is example of closed system. Here coffee cools by giving heat to the surrounding, but the water vapor does not pass into the surrounding, right? Next, third type of the system is called isolated system. Third and the last type of the system is called isolated system. यहाँ पे कॉफ़ी कूल हो गया, यहाँ पर भी ठंडा हो गया. हाउ आई कैन अवॉइड दिस? अगर हमने इस कॉफ़ी को थर्मो फ्लास्क में रखा होता, थर्मस में रखा होता, या फिर इस कप को एक इंसुलेटर में अगर हम रख देंगे, दैन इट कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, राइट? सो सच ए सिस्टम दैट does not allow exchange of either energy or matter. Exchange of either energy or matter, both are not allowed, then it is said to be isolated system. So what is isolated system? System that does not allow exchange of either energy or matter with the surrounding. For example, coffee kept in an insulator or the coffee kept in a thermo flask. It is an isolated system. So these were the three types of the system. Now we try to study the properties of the system. Okay, our study is now constrained to system. तो जो properties है system का, it is of two types. Properties of system कैन बी क्लासीफाइड मेजरली. बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, number of moles, number of properties we have related to system. But how we can classify them into two classes? First one is called extensive property. ये जितने भी properties मैंने अभी बोले उनमें से जितने भी properties है, either the property is extensive or it is intensive. So first we understand what we mean by extensive property. A property which depends upon amount of matter present in a system is called extensive property. Extent पे जो depend करता है, मतलब matter कितना present है
उस पर डिपेंड करता है जब आपका प्रॉपर्टी, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास, अब बॉडी का मास कितना है वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर मैटर कितना है। सिमिलरली वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट? Because if matter is more, the value of these properties will increase. So a property which depends upon amount of matter present in the system is called extensive property. Next type is called intensive property. इंटेंसिव, जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली जो एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्वियसली ए प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, melting point, boiling point of a system, all of them are called intensive property, right? Melting point आप थोड़े से सॉलिड का निकालो या बड़े सॉलिड का, सेम ही आएगा, ठीक है? टेम्परेचर आप एक ग्लास ऑफ वाटर का निकालो या बकेट ऑफ वाटर का, द वैल्यू विल बी सेम। सो दीज आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन मैटर, that's why they are called intensive properties. We'll continue in the next class. Bye bye.